contraceptives part 2. So the part 2 of the contraceptives, the first is going to be the hormonal contraceptives. So hormonal contraceptives में हम लोग क्या देखने वाले हैं, oral contraceptive pills, फिर उसके बाद depo formulations, right, then implants. So first starting with the oral contraceptive pills. So there are different types of oral contraceptive pills, जैसे कंबाइंड पिल्स, फिर प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल है जिसको हम लोग मिनी पिल भी कहते हैं. पोस्ट कॉइटल, इन पोस्ट कॉइटल वी कैन गो फॉर आईयूसीडीज या फिर हार्मोनल पिल्स होती है. इसके अंदर भी प्रोजेस्टेरॉन ओनली मिनी पिल्स होती है. हाई डोज एस्ट्रोजन दे सकते हैं या एंटी प्रोजेस्ट्रोजन दे सकते हैं. देन देयर इज अ वंस अ मंथ पिल एंड देयर इज अ मेल पिल. सो द फर्स्ट, that is the combined pill. Combined pill, it consists of levonorgestrel 0.15 mg and ethinyl estradiol 0.03 mg. It consists of, the packet consists of 28 pills, 21 और 7 days. So 21 जो pills होती है वो 5th day of menstrual cycle से लेके आगे 21 days तक लेना होता है. और ये जो 7 pills होती है they are taken during the time of menses. These 7 pills are nothing but they contain iron. एलिमेंटल आयरन जो होता है वो 60 mg होता है इन ईच पिल. नाउ दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दैट इज़ यूज्ड फॉर न्यूली मैरिड कपल्स हु वांट टू स्पेस द बर्थ, राइट. इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है माला एन और एक होता है माला डी. दोनों के अंदर कंपोजिशन सेम ही रहता है, दैट इज़ 0.15 mg लेवोनॉर्जेस्ट्रल एंड इथिनाइल एस्ट्राडियोल 0.03 mg. लेकिन फ़र्क बस इतना होता है कि माला एन जो होता है वो नो कॉस्ट होता है, एन फॉर नो कॉस्ट, मतलब फ्री होता है. जबकि माला डी जो होता है वो 3 रुपये होता है पर पैकेट. ना ये क्वेश्चंस आते हैं कि एक पिल अगर मिस हो गई, 2 पिल मिस हो गई तो क्या होगा. इफ़ 1 पिल इज़ मिस्ड तो ऐसे कंडीशन में आपको इमीडिएटली वो पिल लेनी है या फिर दूसरे दिन 2 पिल्स लेनी है, वो और जो उस दिन की है वो. इफ़ 2 और मोर देन 2 पिल्स आर मिस्ड तो ऐसे कंडीशन में वो जो पैकेट है उसको डिस्कार्ड करना है और जो बाकी बचा हुआ टाइम है मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसमें बैरियर मेथड का इस्तेमाल करना है. ओके, एंड ऑलवेज चेक फॉर द प्रेगनेंसी रिजल्ट्स ऑन द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. नाउ एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इफ़ 1 पिल इज मिस्ड और उसी दिन पे इफ़ द सेक्सुअल इंटरकोर्स इज डन देन व्हाट शुड बी डन. तो ऐसी कंडीशन में क्या हमें इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी होती है? नहीं. ऐसी कंडीशन में दूसरे दिन 2 पिल्स ले लेना कोई दिक्कत नहीं होती. ओके, ओनली एंड ओनली इफ़ 2 पिल्स आर मिस्ड या मोर देन 2 पिल्स आर मिस्ड, और जब आप वो पूरा पैकेट डिस्कार्ड करते हो तो ऐसे कंडीशन में अगर इंटरकोर्स हो गया, दैट इज़ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, तो ऐसे कंडीशन में आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करना है. देन देयर इज़ अ पीओपी और मिनी पिल्स, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स और मिनी पिल्स. दे आर जनरली गिवन टू लैक्टेटिंग मदर्स. बाकी इसका इतना वाइड स्प्रेड यूज नहीं है. Once a month pill, it consists of once a month. It's like a queen, right? So quinastrol. Quinastrol, it consists of estrogen, but however it is also of a limited use क्योंकि इसका failure rate ज़्यादा होता है. Then the male pill. The male pill, it is nothing but gossipol. It is made up of cotton seed oil. Now it inhibits the spermatogenesis, the process of formation of sperms. इसके और एग्जाम्पल्स आते हैं प्रोजेस्ट्रल, एड्जुडिन. एड्जुडिन इज मेड ऑफ एंटी कैंसर ड्रग दैट इज लोनिडामिन. और फिर कैट्सपर. कैट्सपर इज यूज्ड इन बोथ मेल्स एज वेल एज फीमेल्स. इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कैट्सपर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. देन व्हाट आर द अदर यूजेस? The other uses of this pill can be used for that leads to azoospermia, right? It inhibits the spermatogenesis, so it leads to oligospermia और azoospermia, जिसकी वजह से या तो मेल स्टरलाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर एंटी कैंसर. देन द नेक्स्ट आर द पोस्ट कॉइटल मेजर्स. इसको इमरजेंसी मेजर्स भी कहते हैं या मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी कहते हैं. सबसे पहले तो आईओडीज़ का इस्तेमाल करते हैं. सो विद इन 3 to 5 days ऑफ एक्सपोजर हमें कॉपर कंटेनिंग आईओडीज़ जो है इसका इस्तेमाल करना होता है. हार्मोनल मेथड्स पे जाओगे तो ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है फॉर इट इज़ गोइंग टू बी द पीओपी पिल्स or the mini pills. So remember the progesterone only pills or the mini pills जो होती है they are considered to be the drug of choice for hormonal contraception, emergency contraception. It consists of levonorgestrel 1.5 mg single dose आपको लेना है stat. हाई डोज एस्ट्रोजन भी ले सकते हो, that is 5 mg OD for 5 days. एंटी प्रोजेस्ट्रोजन RU486 that is mifepristone 10 mg stat it should be taken.
देन देर इज अ यूज पे एंड लैंसिस मेथड. अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, दे आर एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स, बट द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज नॉशिया. तो ऐसे कंडीशन में यूज पे एंड लैंसिस मेथड कैन बी यूज. यूज पे एंड लैंसिस मेथड इट यूजेस कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते. अब इसमें क्या होता है कि देर इज़ अ current method that is used and is a standard or conventional method that was used. So according to the current guidelines, 30 micrograms of estrogen containing tablet they should be used. So 4 और 4 टोटल 8 pills लेनी है. So 4 pills, then 4 pills in an interval of 12 hours. Now obviously this should be done within 72 hours after the coitus. Similarly, जो standard method है that was suggested by him, वो 50 micrograms of estrogen, उसके 2 पिल्स लेने हैं 12 आवर्स के इंटरवल के बाद. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओसी पिल्स? इट इनहिबिट्स द ओव्यूलेशन. जनरली जो कंबाइंड ओसी पिल्स होती है दे इनहिबिट द ओव्यूलेशन. जो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स होती है इट अल्टर्स द सर्वाइकल म्यूकस एंड इनहिबिट्स द स्पर्म पेनिट्रेशन. नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग ओसी पिल्स? So the adverse effects are the deep vein thrombosis, myocardial infarction, bleeding disturbances. It can lead to breast cancer and cervical cancer. Very important, remember, it protects against the endometrial cancer, but it leads to cervical cancer. Then it increases the BP, sugar, then it leads to dyslipidemia, hepatocellular adenoma, very important, this is most commonly asked. Then it leads to again headache and migraine. Okay. So contraindications are the same that of the adverse effects. So if there is a thromboembolism, history of thromboembolism, then don't take it. If there are cardiac abnormalities, cardiac failure, don't take it. If the person is suffering from renal failure, liver diseases, congenital hyperlipidemia, don't take it. Okay. Then it has a protective effect against the benign breast diseases. Now this is very important. It can lead to breast cancer, but it is protective against benign breast diseases like fibrocystic disease. It is protective against dysmenorrhea. It maintains a regularity of the cycles. It is protective against the pelvic inflammatory diseases. It is protective against the dysfunctional uterine bleeding. It protects against adenomyosis, endometriosis. Okay, it protects against iron deficiency anemia. क्यों? क्योंकि इस combined oral contraceptive pills के अंदर 7 days के लिए आयरन होता है. फिर it also protects from ectopic pregnancy, from PCOS. Endometrial cancer, very important, it protects from endometrial cancer, but it can lead to cervical cancer, and so it protects from the ovarian cyst and ovarian cancer. Okay. Now there is a pill that we all know that is called as centroman, also known as Saheli. It is nothing but ormeloxifene, that is selective estrogen receptor modulator. Now very important about this pill is that it has a non-steroidal preparation and non-hormonal in nature. इसके अंदर कोई एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वगैरह नहीं होता. इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द छाया प्रोग्राम ऑफ 2018. What are the disadvantages? The disadvantages of this centroman is that it can lead to cervical cancer. It can cause PCOD. Benefits, non-contraception benefit obviously क्या है? Dysfunctional uterine bleeding से बचाता है. फेलियर रेट कितना है इसका? 1.5 to 2% के आसपास है. So it's safe, right? Remember, इसको वंस अ वीक पील भी लेते हैं, बट वंस अ वीक कब लेना है? 3 महीने के बाद. तो पहले 3 महीने 2 पिल्स लेनी है पर वीक, और उसके बाद हर हफ्ते में एक ही पिल लेनी है. देन देयर आर अदर एग्जांपल्स लाइक फेमिलॉन, ये न्यू इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है. 0.02 mg एथिनाइल एस्ट्राडायोल इसमें होता है. या फिर फेमचॉन, दैट इज अ चीवेबल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट दैट इज द डिपो फॉर्मेशंस. तो डिफो फॉर्मुलेशंस के अंदर दिस आर ऑल इंजेक्टेबल्स. तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन ओनली भी होता है, कंबाइंड भी होता है. सो प्रोजेस्टेरॉन ओनली, इट हैज़ अ DMPA, दैट इज डिसमेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट. 150 milligrams intramuscular injection is given every 3 months, and now this is available under a program called as Antara program. So ये किसके अंडर अवेलेबल होता है? अंडर द प्रोग्राम कॉल्ड एज Antara program. Then there is NETIN. NETIN stands for norethistron enanthrate. So 120 milligrams intramuscular, it is given every 2 months. So what are the disadvantages? Disadvantages because these are lipid formulations, right? So that can lead to deep vein thrombosis, dyslipidemia. Apart from that, it can disrupt the normal menstrual cycle. Then what are the examples of combined depot formulations? It includes the Messina, Cyclophem, Cycloprovera. Then talking about the next, that is implants. Implants, examples are Norplant, Norplant R2. So Norplant, it consists of 35 milligrams each of levonorgestrel. तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6
सो 6 इसमें रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 35 मिलीग्राम ईच लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल होता है. इन केस ऑफ नॉर्प्लांट आर 2, so 2 rods are used and 75 milligram each of levonorgestrel. What is the life? The life is 5 years. Then there is a device called as implanon. Implanon consists of single semi-rigid rod. Okay, 30 to 40 micrograms of etonorgestrel. It is 30 to 40 micrograms of 30 to 40 micrograms of etonorgestrel. It is given per day. Then talking about the mechanism of action, it inhibits ovulation. And what is the life? It is acts for 3 years. Then apart from that, transdermal patches are also available. So these transdermal patches, one patch that is used for 7 days. So total of 3 patches they are used per month. लेकिन एक महीने में तो 4 हफ्ते होते हैं. तो रिमेंबर जो मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो हफ्ता होता है जहाँ पे मेंसेस होते हैं, so in 4th week we don't use any patch. So this is about the transdermal patch. So this is all about the hormonal contraceptive pills. So in that we have oral pills, depot formulations, implants and transdermal patches. So the next video will be on the termination of pregnancy, and the next will be on the terminal methods and miscellaneous methods. Thank you.